Hello, my dear students. In today's lecture, most important probable 100 MCQs, which are being framed from all the previous year papers, all previous year examinations of dental category are included. In today's lecture, you will be having a lot of experience regarding which questions to attempt, which are the confusing questions, how to tackle MCQs which you don't know, or how to go with tough MCQs. First rule for today's lecture is you have to be very fast because this is the first round preparation only. We have to complete 100 MCQs in 60 minutes if possible. Time is not a barrier here. We are not in a hurry. But when you are preparing, but when you are preparing for this exam, you must know that for some easy questions, you need not take much more time. So we will wait for all the students to join, and afterwards we will start today's lecture. We request all the students to mark their presence. You will be having an OMR sheet in your exam. Okay, in that OMR sheet, 5 options will be there: A, B, C, D, and E. For those questions you don't want to attempt, you have to go with E. So this will take your extra time. So from today's lecture, if possible, keep an OMR sheet with you, purchase from bookstore, and keep an OMR sheet with you. This will also help in encircling. This is an easy task, but it is time consuming. Okay. So we will wait for all the students to join, and afterwards we'll start today's lecture. Okay. So our first question for today is a 35-year-old patient. Okay, you have to mark the age. It is 35 year with a non-healing extraction socket. Okay, 6 weeks after tooth removal. Okay, so this is somewhat different from dry socket. In dry socket, we have explained that it is 3 to 5 days. Okay. Patient comes immediately next day, then it will not be dry socket. So here the scenario is of 6 weeks after tooth removal. Radiographs show a mouth-eaten osteolytic lesion with ill-defined borders. Which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis. All are answering B. So the first answer correct is chronic suppurative osteomyelitis. Okay, mouth-eaten appearance. It is suggestive of chronic bacterial osteomyelitis. Now, why osteoradionecrosis will not come? Because sometimes if the radiation therapy is discussed, then it can be the answer. But here, no radiation therapy was discussed, and it should be above 50 Gauss units. Okay. Next question: which of the following is the most accurate predictor of future periodontal disease progression? Second question: periodontal disease progression. Today, let's see who is the first in answering. Mayank Malik, very good. In the previous lecture also you were the first. Nice. Here the answer is C. Increased GCF interleukin 1b level, that is the accurate predictor of future periodontal disease progression. Okay. Bleeding on probing, that might indicate inflammation, but it is not an indicator. Clinical attachment loss, it indicates past destruction but not future risk. So here interleukin is the key factor. Okay. Next question. Patient with uncontrolled diabetes. See, one more important technique. When you are having pen in your hand, always have an habit of underlining what is important for you. Okay, so in the next round, it will be easy for you to just focus on this word uncontrolled. Okay, so in this case, we will not perform any procedure because it is already
taught to you. HbA1c is glycosylated hemoglobin is 9.5%. Presence with generalized severe periodontitis. Which host modifying factor is most responsible for their accelerated bone loss? Now, which will be the factor which is a mediator and causing bone loss? Third question. Okay, many people have answered. Good, Savan, you are the first to answer, but let's see. Answer is elevated advanced glycogen aid and products. AGEs are the responsible for accelerated bone loss. Okay, because they bind to RAG receptors, increase osteoclastic inactivity and inflammation. Okay, next question. This PDF will be sent to you. So for all those who want detailed explanation can solve after we will be sending them. Which of the following local anesthetics has the highest risk of methemoglobinemia? Most repeated in each and every exam. Fourth question. Before answering, you have to answer like this. 4E. This is the type of answer you have to provide. Rutu is the first in answering. Correct. It is the most repeated. There is no need of explanation here. Okay. Why? Because prilocaine is metabolized through O-toluidine and it oxidizes hemoglobin. Next question. A mandibular first molar, okay, has fractured lingual cusp. The patient reports sharp pain upon biting but no lingering pain. What is the best diagnosis? Okay. On biting there is pain but no lingering. So some things will be eliminated upon patient's history. जो लोग आंसर दे रहे हैं वो फाइ लिखिए, ऐसे लिखिए, ए लिखिए, पी लिखिए. मेरा नाम पी है तो ऐसे लिखूंगा. ठीक है. धड़ुक ईशा ने ऐसे ही आंसर दिया है तो किसका आंसर है कैसे पता चलेगा? All are answering 5A. It is the crack tooth syndrome. ओके, अब इसमें क्या करोगे आप? क्रैक टूथ में अलग अलग एंगुलेशन से एक्सरे लोगे. तो ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी है आपका इंटरव्यू के लिए. ठीक है. Next question. Which of the following is the most reliable radiographic feature differentiating periapical cementodysplasia from chronic apical periodontitis? ठीक है. पीसीओडी को आपको सीएपी से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? सिक्स्थ क्वेश्चन. वेरी गुड डॉक्टर मयंक मलिक. D is the answer. For differentiating, you have to just focus on mixed radiolucent radiopaque appearance over time. That is the only key factor to go for opacity. It progresses from lucent to opaque in case of cemental problems. Next question. Which antibiotic is contraindicated in a patient taking warfarin due to a high risk of INR elevation? Which of these antibiotics is contraindicated in patient taking warfarin? Seventh question. आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर 100 में से कितने मार्क है वो बताने हैं. ठीक है. तो वो आपको अभी से ठीक है गलत है सब सही लिखना है. ऋतु सुकुड़िया इज द फर्स्ट टू आंसर. हियर द आंसर इज मेट्रोनाइडाजोल. अब क्यों है वो आपको दिखाएंगे. It inhibits this factor CYP2C9 and it increases warfarin levels. ठीक है. तो आपके एग्जाम में यहाँ पे तो बहुत सिंपल ही लिखा है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव वाले ऑर्गेनिज्म से तो आप कौन सी ड्रग नहीं दोगे, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं. ठीक है. एट्थ क्वेश्चन. अ 50-year-old स्मोकर, 50-year-old वाइट नॉन स्क्रैपेबल. बस तो ये आपको पता चल गया है कि कौन सा लीजन है. ऑन द लेटरल टंग. ठीक है. नॉन स्क्रैपेबल मतलब आपको पता हिंट आ गई है. बायोप्सी शोज hyperkeratosis and dysplasia. Which molecular marker is the most predictive of malignant transformation?
ठीक है, 8th क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा? वेरी गुड डॉक्टर मयंक, एज ऑलवेज यू आर द फर्स्ट टू आंसर. Here the answer is A. P53 mutation is the answer. Okay, that is strongly linked to progression from dysplasia to oral squamous cell carcinoma. ठीक है, तो अभी डिस्प्लेसिया जो होता है प्री मेलिग्नेंट, ठीक है, वहां से आपको P53 का म्यूटेशन होना जरूरी है, तो अब जाके OSCC होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which cement provides the best marginal seal for a high strength all ceramic crown? बेस्ट मार्जिनल सील, ये वर्ड आपको राउंड करना है, और हाई स्ट्रेंथ ऑल सिरेमिक क्राउन. 9th क्वेश्चन. हियर द आंसर इज डी, सेल्फ एडेसिव रेजिन सीमेंट. तो मैंने जैसे पहले बताया था, बहुत सारे आंसर्स कंफ्यूजिंग हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, सेल्फ एडेसिव क्या करेगा? बॉन्ड्स टू टूथ एंड सिरामिक, इट मिनिमाइजेस लीकेज. ठीक है, RMGI है वो बेटर देन GI है बट इंफीरियर टू रेजिन सीमेंट्स. ठीक है, तो रेजिन सीमेंट विल बी द आंसर. 10th question. Which nerve is most likely injured during a sagittal split osteotomy leading to permanent paresthesia? 10th question. 10th A is the correct answer. ये तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेशेंट प्रेजेंस विद यूनिलेटरल, ठीक है, ये आपको अंडरलाइन करना है, नॉन टेंडर है, इन द पैरोटिड रीजन. ठीक है, विच इंक्रीजेस ड्यूरिंग मील्स. तो अभी आपको ये पढ़ के ही आपको पता चल जाना चाहिए आंसर. खाने के टाइम सलाइवा की ग्रोथ, सलाइवा जब निकलता है तब कुछ प्रॉब्लम आया होगा, तो क्या आंसर है? तो ऐसे आपको जो कीवर्ड्स है वही आपको अ, समझकर आंसर देना है. 11th में क्या आंसर आएगा? दूसरे सेंटेंस की कोई जरूरत ही नहीं. सही है, साइलोलिथियासिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 12th. Which of the following is the most reliable histological feature distinguishing ameloblastoma और OKC? OKC को हम एमिलोब्लास्टोमा के साथ कैसे डिफरेंस बनाएंगे? 12th क्वेश्चन. Very good, Tanmay. First to answer. Correct answer is stellate reticulum-like cells. Okay, that is the only key feature, and it is unique to ameloblastoma. Next question. A patient with a history of rheumatoid arthritis on methotrexate, presents with oral ulcerations और neutropenia. ठीक है, ये तो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, तो आपको तो पता चल ही गया होगा. Which of the following is the most likely cause? मिथोट्रेक्सेट ले रहा है पेशेंट और ओरल अल्सरेशन और न्यूट्रोपेनिया हो चुका है, तो कौन सा डिसऑर्डर है? तन्मय ने आंसर ए दिया है, फास्ट दिया है, लेकिन देखते हैं सही है गलत है. किरण ने सी आंसर दिया है. हियर द आंसर इज इट इज methotrexate induced mucositis. Okay, because it causes bone marrow suppression. जो भी एंटी मेटाबोलाइट ड्रग होती है उसका ये फीचर कॉमन होता है. which of the 14th question, which of the following is the most accurate predictor of implant failure in a patient with a history of periodontitis? 14th क्वेश्चन. डॉक्टर मयंक आप 23 पर पहुंच गए. डॉक्टर भूमिका आप क्यों आंसर दे नहीं रहे हो?
भले ई लिखिए नहीं आता है तो। देखो सारे बच्चों, ये कोई कंपटीशन नहीं है। जिसको भी नहीं आता है आप ई भी लिखिए, फॉर नॉट नोइंग, दैट विल गिव यू अ स्किल ऑफ लिविंग द क्वेश्चंस ऑल्सो। 14 में क्या आंसर आएगा? Here the answer is smoking greater than 10 cigarettes per day. For implant failure, patient cooperation is the first and utmost factor. तो आपको ये ध्यान रखना है। 15th question. A patient presents with unilateral painless swelling of the lower lip. ठीक है, यूनिलेटरल है, याद रखिए, और पेनलेस है। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या आया? एंडोथेलियल लाइन स्पेसेस है, आरबीसी से भरा हुआ है। अब आपको पता चल गया कि आरबीसी का भरा हुआ कौन सा प्रॉब्लम है 15th में। वेलकम डॉक्टर विनम्रता। 15th आंसर, वेरी गुड तन्मय। Here the answer is hemangioma since RBC are involved. 16th question, which of the following is most likely complication of a bilateral sagittal split osteotomy in a patient with severe mandibular retrognathia? ये तो सिंड्रोम वाला ही क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा जब आप बीएसएसओ करोगे? 16th में क्या आंसर आएगा? मयंक ने ए आंसर दिया है। Correct. The most important complication is condylar resorption. It is common in retrographic patients. Why? Because you have altered the biomechanics. You have created a change in the muscular factors as well as the function. Next question. A patient with a history of Crohn's disease presents with linear ulcer, Crohn's ulcer on the buccal vestibule and cobblestone mucosa. Which of the following is the most likely diagnosis? तो ये तो easy question है। 17th में क्या आंसर आएगा? Correct, B is the answer. Oral Crohn's disease. Okay, cobblestone mucosa, linear ulcers are the factors. 18th question. Which of the following is the most reliable predictor of successful orthodontic tooth movement? ये पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन आया था, ये रिपीट वाला है। 18 में क्या आएगा? भूमिका जी आप ऐसे लिखिए, 18 में ई ऐसे, 18 में सी ऐसे लिखिए, 18 में डी ऐसे लिखिए। वेरी गुड आंसर। ये तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, ये तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए। एल्कलाइन फॉस्फेटेस लेवल indicate the success of orthodontic treatment because it indicates active bone remodeling and osteoblast activity. 19th question. Which of the following is the most likely cause of a delayed eruption of a permanent maxillary central incisor in 9-year-old? Till 9 year, eruption should be complete, but here the delayed is the reason. So which is the cause? 19th question. जो भी लोग को ऐसा लग रहा है कि सर फास्ट जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये हमारा पहले राउंड का ही प्रिपरेशन है। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले राउंड में आपको जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, आपको 3 या 4 सेकंड में आंसर पता हो जाना चाहिए। फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत डीप थिंकिंग करना है, तो वो दूसरे राउंड में जाना है। तो इसलिए हम आज थोड़ा फास्ट जाएंगे। ठीक है, हियर द आंसर इज सुपरन्यूमरल टूथ विल बी the causative for delayed eruption. That is the most common cause. Okay. 20th question. A patient presents with unilateral painless swelling. ठीक है, यूनिलेटरल है, ऐसे आपको पेन से अंडरलाइन करना है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अल्ट्रासाउंड में क्या आ रहा है? हाइपोइकोइक और वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीशन है।
फाइनल रिजल्ट में क्या आया? हाई एमाइलेज लेवल। अब आपको पता चल गया होगा क्या आंसर है, कौन से डिसऑर्डर में हाई एमाइलेज लेवल होते हैं 20 में। According to Tanmay, B is the answer. What about other students? Here the answer is C. Mucous extravasation cyst with high amylase levels. बट ये कहीं ना कहीं सबमेंडिबुलर ग्लैंड के साथ लेना देना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, इसको जाने दो, क्योंकि रेनुला हमेशा फ्लोर ऑफ द माउथ में होता है। तो ये सबमेंडिबुलर ग्लैंड तो थोड़ी पीछे थी, कोई बात नहीं, आप सही रख सकते हो, लेकिन लोकेशन से हिसाब से थोड़ा कंट्रोवर्सी होगी। A 55-year-old patient with chronic kidney disease, stage 4, presents with burning mouth sensation and metallic taste. ठीक है? Serum aluminum levels are elevated. Which of the following is the most likely cause? Serum aluminum levels बढ़ गया है। 21st answer. B is the answer. सही है, एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी है, तभी जाके एल्यूमिनियम बढ़ जाएगा। Which 22nd question, which biphosphonate has the highest affinity for hydroxyapatite and longer skeletal half-life? अब देखो, ऐसे फार्मेक के क्वेश्चन जब आए ना आपके एग्जाम में, तो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं सुना है कि ये आता है, ये आता है, फिर सोचते हैं कि हाँ ये सुना है, तो टाइम बिगड़ेगा और आपको आएगा नहीं। तो जो नहीं आता है तो उसको कृपया करके ई क्लिक करिए। केबीसी में अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं, रिस्क यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी आपको 1.5 लाख दी जाएगी। ये करोड़पति का ही फंडा है। 22nd में क्या आंसर आएगा? ठीक है, सही बात है, जोलेड्रोनेट इज द करेक्ट आंसर। इट हैज हाफ लाइफ ग्रेटर देन 10 years and strongest osteonecrosis risk. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, अ बायोप्सी फ्रॉम ए पैलेटल स्वेलिंग। ठीक है, पैलेट में स्वेलिंग है, वहां से बायोप्सी लिया, तो आपने देखा कि डेंटल पेपिला जैसा टिश्यू है, होस्ट सेल्स है। अब तो आपको आंसर पता चली गया होगा 23rd में क्या आंसर है। होस्ट सेल्स होता है तो क्या आएगा? होस्ट सेल्स, फिर घोस्ट टीथ, ये सब आपको लिंकिंग पता होना चाहिए। 23rd में आंसर है सी। सही बात है, गोरलिन। एक मिनट। कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये पिनबोर्ग ट्यूमर है, सीओटी, उसमें लाइस गैंग रिंग्स आता है। और घोस्ट टीथ कहाँ पे आएंगे? रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया। 24th question, which factor is most critical for successful osseointegration of titanium implant in irradiated bone? ठीक है, आपने रेडिएशन की थेरेपी दी हुई है, फिर आपको इम्प्लांट को ऑस्टियोइंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा फैक्टर मोस्ट क्रिटिकल होता है? 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन। B is the answer according to Dr. Mayank. Here the answer is achieving primary stability. ठीक है, implant stability quotient should be greater than 70. That is the only main factor for perfect osseointegration. 25th question, a patient with TN, trigeminal neuralgia, develops severe hypertension. ठीक है, आफ्टर टेकिंग कार्बामेजेपाइन, 30 मिनट्स के बाद उसको हाइपरटेंशन आ गया, विच इज द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म? 25th क्वेश्चन।
हियर द आंसर इज बी, इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450। ठीक है, कार्बोपेंजेपाइन क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा CYP3A4 को और इंक्रीज करेगा किसका लेवल, एंटी हाइपरटेंसिव्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेडियोग्राफिक फीचर इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर चेरेबिज्म। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता ही होगा। 26th क्वेश्चन, here the answer is bilateral symmetric expansion of posterior mandible, that is correct answer, looking towards heaven, एंजल जो होती है वो हेवन की ओर देखती रहेगी। ठीक है, एंड हियर द म्यूटेशन इज SH3BP2। अब बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा म्यूटेशन होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। 27th क्वेश्चन, कौन सा LA सेफेस्ट है मिथेमोग्लोबिनेमिया। Here the answer is mepivacaine. Okay. Why? Because no significant metabolites which is causing methemoglobinemia. 28th question. A 7-year-old patient has Hutchinson's triad. ठीक है. Which serologic test is most diagnostic? 28th question. 28 answer is A. Okay. FDA ABS, that is the gold standard for congenital syphilis. ठीक है. Next question, which cement is contraindicated for luting zirconia crowns due to poor adhesion? 29. C is the answer given by some student. Here the correct answer is zirconia cannot be used for luting with luting zirconia you cannot use GIC because no chemical bond to zirconia. 30th question, which gene mutation is most associated with early onset periodontitis in non-smokers? मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे चेरेबिज्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चेरेबिज्म में कौन सा जीन म्यूटेशन होता है, फाइब्रस डिस्प्लेसिया में कौन सा जीन म्यूटेशन। तो ऐसे जितने भी जीन म्यूटेशंस होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, वरना लीव करना पड़ेगा क्वेश्चन को। 30, the answer is B. Cathepsin C is the correct answer. That mutation is associated with early periodontitis where patient is not smoking. Okay, it also causes Papillon-Lefebvre syndrome, which is also known as aggressive periodontitis. 31st question, a patient with man 2A syndrome with bilateral mucosal neuromas of tongue and lips, कौन सा जीन जेनेटिक म्यूटेशन है। अभी मैंने आपको बताया, भले आज के दिन क्वेश्चन ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी जेनेटिक म्यूटेशंस वाले लिंकिंग है वो आपको याद होने चाहिए। 31st क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा।
B is the answer by some. A is answer by some. Here the A is correct answer. Rat proto-oncogene. अब देख लो, आपको ऐसा लगे कि सर आप फास्ट आ रहे हो, लेकिन ये पीडीएफ आपकी काम की है। पीटीएन है वो काउडेन के साथ लेना देना है, एसएचएच है वो गोरलिन के साथ लेना देना है, बीआरसी है ब्रेस्ट वो ओवेरियन कैंसर के साथ लिंकिंग है। ठीक है। 32nd question. A patient with chronic myeloid leukemia presents with gingival enlargement and petechia. Which oral finding is most specific to CML? 32nd question. Here the answer is chloroma is the answer, okay? Because extra myeloid tumors are seen in CML and AML. 33rd question. Which pharmacological agent is most effective in preventing dry socket? Dry socket कौन अटकाएगा? Which drug or which pharmacological agent? 33rd. Here the answer is chlorhexidine will be the main factor that prevents alveolar osteitis. ये प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग यूजुनल लिख देंगे, लेकिन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। अब प्रिवेंशन वो कैसे करेंगे? तो बैक्टीरियल का लोड कम कर देंगे, इससे वो एक फायदा रहता है। बहुत सारे क्लिनिक में एक रुपीज लेने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे पेशेंट जाएगा ना उसको क्लोरेक्स का रिंस करवाएंगे, फिर चेकअप करेंगे। तो ये भी प्रोटोकॉल होता है। हम जब पुणे गए थे इम्प्लांट का कोर्स करने के लिए, तब ऐसा हमने भी सीखा था। वहाँ पे सब फॉरेन के पेशेंट्स आते थे। A 60-year-old patient with Parkinson's disease develops severe sialorrhea. Which drug is the first line treatment? Increased salivation हो रहा है, तो आपको कौन सी ड्रग देनी है? 34th question. Here the answer is glycopyrrolate. ठीक है। अब आपको पता होगा कि एट्रोपिन तो है ही, लेकिन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगा, सीएनएस की सिस्टम को खराब कर देगा। ठीक है। तो ग्लाइकोपाइरोलेट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और पार्किंसन में वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है प्रीफर्ड के लिए, नॉट ट्रीटमेंट। अ पेशेंट विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑन एटेनरसेप्ट, ठीक है, एक ड्रग है, विथ ए नॉन हीलिंग अल्सर ऑन द हार्ड पैलेट, बायोप्सी शोज एटिपिकल लिम्फोसाइट्स। ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स वाला डिसऑर्डर है, तो क्या डायग्नोसिस आएगा? तो बहुत सारे लोगों को ये होगा कि सर ये क्वेश्चन आता है नहीं आता है, तो थोड़ा वर्ड के ऊपर जाना है, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर जाना है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिम्फोसाइट्स है, तो ऑब्वियसली लिम्फोमा ही होगा ना। ठीक है। ये थोड़ा ट्यूबरकुलोसिस अल्सर होगा, तो ये से भी आपको आंसर पक्के आ जाने चाहिए। ठीक है। 36th question. Which radiographic feature is most indicative of early stage cementoblastoma? ठीक है। कौन सा रेडियोग्राफिक फीचर है जो इंडिकेशन अर्ली है? Here the answer is D, or sorry A, radiolucent rim around a radiopaque mass. That is the
इंडिकेशन ऑफ सीमेंटोब्लास्टोमा। ठीक है, ल्यूसेंट और रेडियो ओपेक वाला दोनों रीजन, जब भी सीमेंटोब्लास्टोमा होगा तब ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेशेंट विथ वॉन विलेब्रांड डिसीज टाइप 1 requires a full mouth extraction. Which hemostatic agent is most effective? 37th question. 37th question. Here the answer is desmopressin is the answer. That is the most commonly used hemostatic agent, and it increases von Willebrand release from endothelial cells in type 1. Next question. Which nerve block provides the best anesthesia for a biopsy of anterior hard palate? ये तो इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जब जीपीएससी की प्रिपरेशन चालू करते हैं तब ये क्वेश्चन आया था कि सर वो लोग कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हमने ये बोला कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ये एनाटोमी का क्वेश्चन गिनो, या फिर ओएस का गिनो, या फिर क्रॉसटॉक का गिनो, ये कोई भी क्वेश्चन आप गिन सकते हो, क्योंकि नर्व सप्लाई तो कहीं ना कहीं तो आती ही है। ठीक है, ओएस में भी आता है, एनाटोमी में आता है। तो हमने इसके लिए बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन दिया था। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें से आपके एनाटॉमी के क्वेश्चंस, फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस, जो रिपीटेड पेपर्स है ना उसमें से वो करना है, और बाकी जो आप डीप में करते हो वो तो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट कर ही लेना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एस शेप्ड आर्टरी कौन सी है, एस शेप्ड नर्व कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आंसर है बी, 38 में आंसर है बी, नेजोबैलेटाइन इज द आंसर। 39th क्वेश्चन, विच ओरल लीजन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग? आर्सेनिक के साथ कौन सा लीजन एसोसिएटेड है? 39 आंसर क्या आएगा? B is the correct answer, melanosis. Next question. A 12-year-old patient presents with hypoplastic maxillary. हाइपोप्लास्टिक है, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है, और टोरोडोंटिज्म है प्राइमरी मोलर में। तो कौन सा सिंड्रोम आएगा यहाँ पे? 40 में बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। सी इज द आंसर, दैट इज करेक्ट, ट्राइकोडेंटोसियस सिंड्रोम। उसमें क्या क्या आएगा? टोरोडोंटिज्म, इनेमल हाइपोप्लेजिया और किंकी हेयर इज द करेक्ट आंसर। 41st क्वेश्चन, अ 15-year ओल्ड पेशेंट प्रेजेंस विद एन इम्पैक्टेड मैक्सिलरी कैनाइन। ठीक है, इम्पैक्शन है। रेडियोग्राफ्स रिवील्स ए वेल सर्कमस्क्राइब्ड रेडियोल्यूसेंसी। ठीक है, सराउंडिंग द क्राउन विथ scattered radio opacities. Histology shows ghost cells. What is the diagnosis? 41st question. सही बात है, वैसे डेंटिजरस सिस्ट की ओर जा रहा था लेकिन कोस्ट सेल्स आए तो आपको पता ही है। तो ये आपको एमसीक्यू में काम आता है कि ये है तो ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट ऑन वारफरिन कितना है आईएनआर? 2.5 है, रिक्वायर्स इमीडिएट टूथ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, विच ड्रग इंटरेक्शन वुड मोस्ट डेंजरसली एलिवेट आईएनआर? 42nd question. B is the answer by Mayank and Tanmay. Correct answer, metronidazole. Why? Because warfarin metabolic crash will be there with metronidazole. Okay, in the previous question also we have discussed this thing.
Biopsy from a mandibular radiolucency shows sheets of clear cells, hyperchromatic nuclei and delicate. तो ये डिस्प्लेजिया के सब फीचर्स है. विच डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली. ठीक है. न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म आता है, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लिया आता, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाना. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 43rd में? Here the answer is मेटास्टेटिक renal cell carcinoma. अब ये देखो आपको बहुत सारी डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन अब आप याद रख लो स्विच ऑफ क्लियर सेल्स है तो आपको रिनल सेल तो क्लियर सेल ऐसे आपको भी याद रखना है. ठीक है. Patient on IV zoledronate for breast cancer for 18 months needs a tooth extraction. When is the safest time to perform it? 44th question. Here the answer is immediately, no delay needed. Okay, because it no drug already reduces oncology dose. Focus on infection control. Here, no need to wait. Okay. 45th question. A 60-year-old presents with TMJ pain and limited opening. CBCT shows sunburst, periosteal reaction and osteolysis of the condyle. ठीक है. sunburst appearance है तो क्या यहाँ पे आंसर आएगा 45th. 44 सबका गलत हुआ होगा. 45th में क्या आंसर आएगा? Here the answer is chondrosarcoma, sunburst appearance plus condylar destruction. 46th question. Which factor is most predictive of poor response to non-surgical periodontal therapy? Here the answer is D. Smoking plus interleukin 1b genotype positive. तो यहाँ पे देखा आपने पेरिडोंटल के साथ प्रोग्नोसिस या सक्सेस की बात है तो पेशेंट कोऑपरेशन एक फैक्टर आया, स्मोकिंग आया, उसके ऊपर ये लोग एमसीक्यूज का फोकस कर रहे हैं. 47th क्वेश्चन. अ पेशेंट विथ स्क्लेरोडर्मा रबरी बैंड ओएसएमएफ का बाय कंप्लेन्स ऑफ माइक्रोस्टोमिया. Which histologic feature is most expected in labial salivary glands? स्क्लेरोडर्मा भी है और माइक्रोस्टोमिया भी है तो लेबियल सलेवरी ग्लैंड्स में कौन सा फीचर आएगा? B is the answer. Correct. Here there will be atrophy of acini and fibrosis. Next question. A 5-year-old 5 साल का बच्चा है या बच्ची है, बायलेटरल स्वेलिंग है, एंगल ऑफ मैंडिबल. ठीक है. अब ये क्या दिखा आपको? बायलेटरल स्वेलिंग होता है तो चेरबिज्म जैसा आएगा. तो 48 में क्या आंसर है? थोड़ी देर हमने पहले डिस्कस किया हुआ था. 48 में क्या आंसर है? करेक्ट आंसर. अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ये लोग ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछते हैं तो जीन का इंपॉर्टेंस, डिसीज का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है. फिर से ये देखो नए नए जीन्स आ गए. पाइफर में ये आता है, रन वाला क्लिडोग्रेनिल में आता है, पीटीसीएच गोरलिन में आता है. ठीक है. थोड़ा ये रटना भी पड़ता है आपको एग्जाम में क्लियर होने के लिए. Which salivary gland tumor is most associated with radiation exposure? 49th question.
Here the answer is C, mucoepidermoid carcinoma. ठीक है, that is the most common tumor also. A 45-year 50th question, 45-year-old with HPV, ठीक है, plus oropharyngeal SCC, squamous cell carcinoma, undergoes a neck dissection. Which biomarker predicts best response to de-escalated radiotherapy? 50th क्वेश्चन. अब आपको लगेगा सर ये सर्जरी वाला क्वेश्चन है, तो ये ओरल सर्जरी में भी आ सकता है. 50 में आंसर आएगा ए, P16 ओवर एक्सप्रेशन. तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिसको भी क्वेश्चन से नहीं आता है तो कृपया करके पहले राउंड में ई मत टिक करना, ओएमआर शीट में आपको दूसरे तीसरे में पहले राउंड में उसको खाली इग्नोर कर देना है कि ये क्यों ऑप्शन ही नहीं पढ़ने का है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. 51st, a 12-year-old patient, anterior open bite है, bilateral cross bite है, सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस में स्टीप एंगल दिखा, FMA 35 है. Which growth modification appliance is most effective? 51st question. Here the answer is high pull headgear. ठीक है. It corrects vertically maxillary growers. ये एक vertically maxillary grow का केस था. ठीक है. ये हमने जब ऑर्थो का लेक्चर लिया था हेड गियर का, तब आपको ये सब समझाया था, ट्रिक भी बताई थी आपको. अब मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर 52nd क्वेश्चन. हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टेस्ट नॉन वाइटल. ठीक है, टूथ ऊपर का नॉन वाइटल है तो सिस्ट कुछ होगा ना, एपेक्स वाला. रेडियोग्राफ शोज एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रूट रिजॉर्प्शन. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट? एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन की ट्रीटमेंट क्या है नॉन वाइटल ट्रूथ में? 52nd में क्या आंसर आएगा? Here the answer is calcium hydroxide dressing. Okay, it halts the inflammatory resorption via alkaline pH and antimicrobial activity. Okay, you have to use MTA for necrotic immature epices, not resorption. Okay, so there will be a controversy here also, but here they have given the answer A. 53rd question. A zirconia crown on a maxillary first molar fractures after 2 years. The fracture surface shows crystalline grains with no ductile dimples. तो रीजन क्या है फ्रैक्चर का? 53rd का आंसर क्या है? Here the answer is कुछ लोग डी बता रहे, कुछ लोग बी बता रहे. दो साल के बाद फ्रैक्चर हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, तुरंत ही नहीं हुआ है. तो इसमें आंसर ए आ सकता है. ठीक है. सबक्रिटिकल क्रैक प्रोपगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 60. A dental implant in the posterior mandible fractures at the abutment screw interface. ठीक है, थोड़े 5 से क्वेश्चंस बाकी मिसिंग है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन.
60. A dental implant in the posterior mandible fractures at the abutment screw interface. The fracture shows fatigue striations. What is the most likely cause? एक minute. 60th question. Here the answer is A, due to excessive bending movement. That is the cause of fracture. Next question, 61st. A 22-year-old presents with unilateral TMJ ankylosis and ipsilateral underdeveloped mandibular condyle. ठीक है, TMJ ankylosis है, condyle underdeveloped है. CT में क्या आता है? Fusion of the condyle to temporal bone. Which syndrome is most likely? कौन सा syndrome यहाँ पे हो सकता है? 61st question. Here the answer is golden hair syndrome. तो जैसे ही हमने पिछले 2-3 लेक्चर में बताया था, सारे सिंड्रोम्स आपको पता होने चाहिए. हमने आपको नोट्स भी भेजा हुआ है. जितने भी सिंड्रोम्स है वो आपको ठीक से याद होना चाहिए. एक दो क्वेश्चन सिंड्रोम के आते ही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट ऑन एलेंड्रोनेट for 7 years requires implant placement. When is the earliest safe time post drug holiday? ठीक है, कब आप यूज कर सकते हो? 60 second answer. Here D is the answer, 2 years. Correct, you have to wait for 2 years. For oral biphosphonates, you have to wait for greater than 4 years. Okay. Next question. A radiolucent lesion in the posterior mandible shows ghost cells. फिर से ये आ रहा है, ghost cells के बहुत सारे क्वेश्चन आए. एंड डेंटिनॉइड मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल बदल गया है. विच प्रोटीन इज मोस्ट ओवर एक्सप्रेस्ड? 63 में कोस्ट सेल के साथ एसोसिएटेड है और कौन सा प्रोटीन होगा? Here the answer is correct. B, catenin is the answer. Okay. DSSP ये डेंटिनोजेनेसिस का है. AMBN एम्लोब्लास्टोमा का है. केराटिन 19 वो ओकेसी का है. ठीक है. और बी कैटेनिन वो किसका है? बोर्लिन सिस्ट का है. ठीक है. 64th question. During mandibular advancement surgery, the proximal segment displaces superiorly. Which muscle is most responsible? Here the answer is lateral pterygoid. Okay. It pulls the proximal segment superiorly and medially during BSSO. 65th question. A zirconia implant fractures at the neck. SEM ठीक है, shows intergranular fractures. What is the most likely cause?
इंटरग्रेनुलर फ्रैक्चर हो चुका है, अंदर एक दूसरे के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वहां पे फ्रैक्चर हुआ है। करेक्ट आंसर, intergranular fractures is linked to temperature defect, improper sintering temperature. Next question. A patient with scleroderma develops refractory gingival recession. तो कौन सा साइटोकाइन एसोसिएटेड है? Here the answer is TGFB. A is the correct answer related to cyto is scleroderma. Next question 67. A 10-year-old child has bilateral impacted canines and root dilation. सीरम कैल्शियम भी बढ़ गया है, तो कौन सा जीन म्यूटेशन एक्सपेक्टेड है? Here the answer is C, PTHR. ठीक है, that is the answer. प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म का म्यूटेशन हो जाएगा यहाँ पे. PTCH1 is for Gorlin, Vectorial Association for SHS and Cleidocranial Dysplasia run X2. तो इस पीडीएफ में ही 20 या 30 जीन्स वाला क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको देखना है कोरिलेशन करके. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, वेट अ मिनट. Which local anesthetic has the lowest risk of methemoglobinemia in a G6PD deficient patient? A repeated question है, 68th question. Here the answer is D. Lidocaine is the correct answer. It has the lowest risk of methemoglobinemia. ठीक है, the correct order is this. ठीक है. Biopsy of a palatal ulcer shows granulomas, Schumann bodies. इसमें क्या आंसर आएगा? Correct answer, sarcoidosis is associated with Schumann bodies. Next question. Which factor most increases microleakage in a class 2 composite restoration? 70th question. Correct, high C factor is the correct answer. Next question, 71st.
55 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, पार्किंसन डिजीज है, साइलेरिया हो चुका है, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू टू वर्सनिंग ट्रेमर्स? सेवेंटी वन में डी इज द आंसर बाय तन्मय. Correct answer, amitriptyline cannot be the answer. Okay. Next question, 72nd. बायोप्सी आपने ली है मैंडिबुलर स्वेलिंग की. उसमें आपको देखने को मिल रहा है पहली साइडेड न्यूक्लिया है और ऑल्टरनेटिक हाइपरसेल्युलर और हाइपोसेल्युलर जोन्स है. तो कौन सी पैटर्न आपको देखने को मिलेगी, क्या डायग्नोसिस होगा 72nd में? करेक्ट आंसर डी, एंटनी ए और डी पैटर्न. ठीक है. And this is important, which is pathognomic for schwannoma, WHO 22. 73rd, a 7-year-old है patient, pulp chambers enlarged है permanent molars में, सीरम alkaline phosphate लो है, तो कौन सा जीन म्यूटेटेड है? 73rd question. Correct answer is ALPL. That is the correct answer. फिर से बता रहे, डीएसएसपी है डेंटिनोजेनेसिस में होगा, एमएलएक्स होगा एमिलोजेनेसिस में होगा, कॉल एवर है वो ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्ट में होगा. ठीक है. 74th क्वेश्चन, विच फैक्टर मोस्ट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इम्प्लांट फेलियर इन अ डायबिटिक पेशेंट? डायबिटिक पेशेंट में इम्प्लांट फेल होता है तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो बात है. 74th question. Answer is A by all. That is correct answer. Increased glycosited hemoglobin is the cause. 75th, a maxillary lateral incisor has a parietal groove extending to apex. पेरीएपिकल रेडियोलेशंस भी है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है इसमें? 75th. Here the answer is intentional replantation. ठीक है. Next question, 76th. A patient on warfarin INR is 2 needs multiple extractions. तो कौन सी एनाल्जेसिक सेफेस्ट होगी? ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर एसिटोमिनोफेन, वो तो आपको पता ही है, पैरासीटामोल तो हमेशा सेफ ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीसीटी में सॉल्ट एंड पेपर ट्रेबेकुलेशन आया, तो सॉल्ट एंड पेपर आपको कहाँ देखने को मिलेगा अपीयरेंस? 77.
करेक्ट आंसर हाइपर पैराथायरिज्म में पेजेट में कॉटन वूल देखने को मिलेगा, ऑस्टियोपेट्रोसिस में मार्बल बोन देखने को मिलेगा, हाइपर पैराथायरिज्म ब्राउन ब्राउन ट्यूमर्स उसमें सॉल्ट एंड पेपर और ग्राउंड ग्लास फाइब्रस डिस्प्लेजिया में। 78 which oral lesion is most associated with nivolumab therapy? 78th question. A is the answer given by Dr. Mayank. Lycanode reaction is the answer. Okay, why? Because anti-PD-1 it triggers CD8 plus cell and so there will be an autoimmune type reaction on basal keratinocytes. 79th क्वेश्चन 3 साल का बच्चा है नेटल टीथ है कौन सा सिंड्रोम हो सकता है नेटल टीथ के साथ कौन सा सिंड्रोम की चांसेस ज्यादा है 79 here the answer is cleidocranial dysplasia it is linked to net oh कम से कम ठीक है which is least likely this has no relation with this other else are correctly linked to natal teeth next question a biphosphonate naive patient with osteoporosis develops osteonecrosis of the jaw. Which biphosphonate has the longest skeletal half-life? ये चार में से सबसे ज्यादा कौन सी हाफ लाइफ होती है Here the answer is सोलेड्रोनेट ठीक है इसकी हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा होती है 11 साल से ज्यादा होती है 81st क्वेश्चन 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है जोगरेन सिंड्रोम है पेरोटिड मास है एफएनए में ऑन्कोसाइटिक सेल्स यहाँ से आपका आंसर चालू हो गया लिम्फोइड स्ट्रोमा है अब बताइए ये किसकी प्रॉपर्टी है 81st क्वेश्चन Here the answer is Warthin's tumor. ठीक है these are the findings for Warthin tumor, oncocyte lymphoid stroma and it is having increased risk in Sjogren syndrome. 82nd question. Mandibular lesion shows tadpole cells, intercellular keratin. कौन सा म्यूटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 82nd क्वेश्चन Here the answer is B. CRTC1 MAML2 फ्यूजन बहुत बड़ा नाम है आपको याद रख लेना है ठीक है ये भी याद रखना है BRF एमिलोब्लास्टोमा PTCH OKC EWS एविंग सार्कोमा 83rd क्वेश्चन 83rd क्वेश्चन ड्रिवन स्नो इसको तो आपको आंसर पता ही होगा इन द इंटीरियर मैक्सिला हिस्टोलॉजी रिवील्स एमाइलॉइड लाइक मटेरियल तो कौन सा प्रोटीन यहाँ पे डोमिनेट करेगा 83rd में
करेक्ट आंसर इज डी, ODAM. ठीक है, odontogenic ameloblast associated protein. 84th question. A 10-year-old child has bilateral impacted canines, dentin dysplasia and blue sclera. अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा डिसऑर्डर है. सीरम एल्कलाइन फोस्फेट इज नॉर्मल, तो कौन सा जीन म्यूटेटेड है. 84th क्वेश्चन. करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला ही, COL A1, दैट इज द findings for osteogenesis imperfecta. DSSP for dentinogenesis, run for cleidocranial, ALPL for hypophosphatasia. Next question. A zirconia implant fractures at the neck. ठीक है, SCM माइक्रोस्कोपी में क्लीवेज प्लेन्स विथ नो फटीग स्ट्राइएशंस. तो क्या आंसर आएगा 85th में. बी इज द आंसर. तो पहले भी आपने डी बताया था सिंटरिंग वाला, यहाँ पे ओवरलोडिंग आएगा. ठीक है, फटीग का कोई रोल नहीं. ठीक है, तो it shows cleavage planes with no fatigue striations. So these are the chances that overloading during insertion may be there. Okay. Next question, 86. A patient on rivaroxaban, that is XA inhibitor, he needs urgent extraction. Which reversal agent is most effective? कौन सा रिवर्सल एजेंट यहाँ पे इफेक्टिव होगा? Here the answer is andexanate alpha. ठीक है, that is the specific reversal agent for factor XA inhibitors. ठीक है. Next question. Which factor increases marginal bone loss around implants in periodontitis patient? कौन सा फैक्टर बॉन्ड लॉस को इंक्रीज करेगा? सही बात है, मैंने जैसे बताया जब भी इम्प्लांट वाले पेरियपेक वो पेरिडोंटाइटिस वाले पेशेंट को ऑपरेशन का, तो स्मोकिंग पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है. स्मोकिंग वाला आंसर आएगा. 88. Which anesthetic is safest in a patient with porphyria? कौन सा एनेस्थेटिक सेफेस्ट है? Here the answer is lidocaine, that is the safest. ठीक है, क्योंकि एमाइड वाले ट्रिगर नहीं करते हैं, एस्टर्स वाले पोर्फायरिया को ट्रिगर करते हैं. ठीक है, तो वो आपको ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 89th है. पेशेंट को टीएन है, रिफ्रैक्टरी पेन है, जेनेटिक टेस्टिंग में ये म्यूटेशन आया, कौन सी ड्रग लिस्ट इफेक्टिव होगी?
89 में क्या आंसर आएगा? Here the answer is gabapentin will be the least effective. 90th question. Biopsy shows stellate reticulum-like cells or granular cell changes. कौन सी ट्रीटमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? Stellate reticulum-like cells और granular cell changes. तो इसमें आप कौन सी ट्रीटमेंट नहीं करोगे? In 90, you will not go for BARF inhibitor. Okay. Next question, 91st. A 65-year-old with periimplantitis has 5 millimeter probing depths and bleeding on probing. Radiograph shows 40% bone loss. आपका पहला सर्जिकल इंटरवेंशन क्या आएगा इसमें? Here the answer is you have to go with doxycycline as well as open flap debridement. Okay, because this is a case of stage 3 moderate disease. You have to go for debridement as well as antibiotics. That is the first line. 92nd question. बायोप्सी में आपको क्या दिख रहा है? पेरिवास्कुलर हाइलिनाइजेशन दिख रहा है और सो टूथ रेटेपेक्स। सो टूथ का नाम आया तो आपको पता चली जाएगा आंसर क्या आएगा 92nd में। पेरिवास्कुलर हाइलिनाइजेशन भी है। Here the correct answer is lichen planus, sawtooth rete ridges, civet bodies. That are the findings. 93rd question. A 7-year-old child has bilateral macrodontia, taurodontism, shovel-shaped incisors. जीन में ये आ रहा है म्यूटेशन, तो कौन सी मैलिग्नेंट की रिस्क हो सकती है? नाइन्टी थर्ड में आंसर आएगा कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, अब ये जो म्यूटेशन वाला है ना एक्सिन, वो ओलिगोडोंशिया भी करता है और कोलोरेक्टल पॉलीपोसिस भी कर सकता है। 94th क्वेश्चन। पेशेंट विथ एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा डेवलप सीवियर माइक्रोस्टोमिया। इसमें कौन सा प्रोटीन डिफेक्टिव है? In 94, A is the correct answer. Type 7 collagen is defective. ठीक है। 95th क्वेश्चन। लीजन है वो रेडियोलुसेंट है, स्यूडो रोजेट्स दिख रहे हैं, तो इसमें से क्या डायग्नोसिस आएगा 95th?
95th में क्या आंसर आएगा? एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा सिलिंड्रोमा इज द आंसर। स्यूडोरोसेट्स यानी कि पेरिन्यूरल इन्वेजन पैटर्न इज द फाइंडिंग। और ट्रू रोसेट्स न्यूरोब्लास्टोमा में देखने को मिलेगा। सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैन्युलोमा में मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स देखने को मिलेगा। 96th क्वेश्चन, which factor most compromises zirconia crown adhesion? 96th question. Here the answer is airborne particle aberration. That is the factor which compromises zirconia crown adhesion. Okay, due to the surface cracks, there are chances that bond will be weaker. 97th question, a patient on dabigatran, उसको अर्जेंट एक्सट्रैक्शन करवाना है, आयना नॉर्मल है, तो कौन सा रिवर्सल एजेंट यहाँ पे यूज होगा? उसका रिवर्सल एजेंट कौन सा है? In 97, the answer is B. Correct answer. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडेक्सनेट फॉर एक्से इनहिबिटर, ठीक है। 98th question, a 3D printed titanium implant with 800 micrometer pore size shows 50% bond in growth. What is the best modification to increase osteo integration? 98th question. Here C is the आंसर। आपको हाइड्रोक्सीएपेटाइट का कोटिंग ऐड कर देना है। 99th एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बाइफॉस्फोनेट रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस वाला लीजन, उसमें एक्टिनोमाइसिस कॉलोनीज है, तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक आप दोगे? 99 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हियर द करेक्ट आंसर इज क्लिंडामाइसिन, ठीक है, दैट इज द प्रिफर्ड एंटीबायोटिक। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, a patient with BMP2 mutation has multiple impacted supernumerary teeth. Which treatment is contraindicated? Here the answer is C. RNKL inhibitor therapy. ठीक है, तो अभी सारे बच्चों को 100 में से कितने मार्क्स आए वो अभी आप मैसेज कीजिए, ठीक है, तब जाके हम सबका इवेल्युएशन करेंगे कौन कितना आगे है। और मैं तो ये बार बार बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसमें आप अभी ई का ट्राई कीजिए। आप पॉसिबल हो तो ओएमआर शीट भी रखना है, अगली बार आपके वो जो लेक्चर होगा तब, तो आपको ये बहुत काम की चीज होगी, ठीक है। अब सारे स्कोर्स मुझे बताइए, आउट ऑफ 100 व्हाट इज योर स्कोर?
दो चीज यहाँ पे आज सीखने को मिली आपको कि ये कोई पल्स के क्वेश्चंस नहीं थे। मान लो कि अब जीपीएससी वाले ऐसा सोचेंगे कि आपको कुछ नए क्वेश्चंस पूछने हैं, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा हुआ कि जिसका बेसिक, जिसका लॉजिक क्लियर है, वही आंसर आएगा। किरण को 50 मार्क्स मिले, सही बात है। तो जीपीएससी में थोड़ा पेपर ऐसा टफ रहेगा। और किसी के मार्क्स मुझे बताइए, तो हमको पता चलेगा। आज जिसको भी 80 के ऊपर आया, वो एक बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट होगा, क्योंकि इसमें आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको ही पता नहीं होगा कि ये सर्जरी का पेपर था, मेडिसिन का था। तो ये से कोरिलेटेड वाले क्वेश्चंस आएंगे। गुड तन्मय, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अबाउट 75 बहुत ही बढ़िया है। आप नेगेटिव मार्क्स लिखकर मुझे बताइए, 78 सही है ऐसे नहीं, सही होने के बाद कितने नेगेटिव है। गुड ऋतु, क्योंकि ये जीपीएससी में हर बार यही दिक्कत होती है। 200 क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग 150 सही करके आते हैं। 50 गलत हो गया तो 1/3 यानी कि 17 जैसे माइनस हो जाएंगे, तो हमारा स्कोर हो जाएगा 132। ठीक है। या डॉक्टर मयंक, आई वाज हैविंग द सेम प्रॉब्लम, क्योंकि जो लोग अभी रिसेंटली नीट एमडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं जीपीएससी सबको एडवांटेज देता है। आपका बेसिक क्लियर है, तो आपकी एक बात ये थी आज कि आपने कुछ ज्यादा ही अटेम्प्ट किया। कोई बात नहीं, आई एम रिकमेंडिंग यू फॉर अटेम्प्टिंग ई। ठीक है, ऐसा नहीं कि 200 में से आपको 180 नहीं आता तो 180 ई करके आ जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा। हमारी एप्लीकेशन में अनलिमिटेड एग्जाम्स है, डे 1, डे 2, डे 3। आपके पास जितना भी टाइम है, तो डे 1 टेस्ट में जाइए, एक 10 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए। फिर देखिए कि आपके 10 में से कितने तुक्के सही हो रहे हैं। अगर नहीं आता है तो, आता है तो कोई बात नहीं। ऐसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे डे 30 की टेस्ट है। हमारे वेबसाइट में भी अनलिमिटेड टेस्ट है। तो आपको हम इतना प्रिपरेशन करवाएंगे, भले आप लेट ज्वाइन हुए हो। हमने तो ये 1 साल हो गया कोर्स का। पिछली फरवरी में हमने यही दिन को कोर्स लॉन्च किया था। वी आर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ दिस डेंटल जीपीएससी कोर्स। तो भले आपने लेट ज्वाइन किया हो, लेकिन हम 12 दिन में आपको बहुत सारा गाइडेंस देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कॉल करके कल थोड़ी बातचीत कर लेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये लास्ट डे की प्रिपरेशन होती है, लास्ट टाइम की, वो इम्पोर्टेंट होती है। कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कैसे करना। और दूसरी बात ये है कि मुझे भी ऐसा होता है कि चलो मैं अटेम्प्ट कर ही लेता हूँ, सही हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मुझे कहाँ लॉस है। मैं जो क्लिनिक है मुझे, मैं वहां पे सेट हूँ। तो ये थिंकिंग रख के आप ये करोगे ना अटेम्प्ट, तो गलत होगा। ठीक है, तो थोड़ा सोच कर। और जो भी बच्चों को ये दिक्कत आ रहा है, नेगेटिव ज्यादा हो रहे, किरण को भी प्रॉब्लम था कि सर मुझे नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, तो आप एक काम करिए। हमने हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें सारे सब्जेक्ट में। जी डॉक्टर ईशा, आपको 2 महीने पहले हमने ही बताया था आप हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। आप अभी भी ज्वाइन हो सकते हो। ओनली 999 फीस है अभी। आप अप्लाई करोगे कोड, तो आपको फीस मिल जाएगी। वो 2000 का कोर्स है, 999 में हो जाएगा। अभी छोड़ो, वो कल की बात करेंगे। अभी मुझे गाइडेंस देने दो। सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है कि मैं ये टिक कर लूँ, वो टिक कर लूँ। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव स्कोर जो होता है ना, वो आपको बहुत पीछे ले जाता है। दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर पल्स होती है, तो देखो कोई सब्जेक्ट होता है वो थोड़ी एक दिन में पूरा हो जाएगा। तो अभी आपके पास जितना टाइम कम है, तो इसमें पल्स के कोई भी टॉपिक के पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। ब्रैकेट में लिखा होता है एम्स वाले क्वेश्चन, ये वाले। तो वो आपको ध्यान से पढ़ना है। हम आपको ट्रिपलेट भी भेजेंगे, जिनके पास ट्रिपलेट नहीं है सॉफ्ट कॉपी, वो भी भेजेंगे। तो थोड़ा रिवीजन करना है, ये नहीं कि पूरा दिन रात ट्रिपलेट करते रहना है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ इवेल्युएशन आपकी जरूरत है। तो ये कोर्स में डे 1 टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा, 10 में से सर मेरे को 8 गलत हुए। तो आपको ज्यादा तुक्केबाजी नहीं करना है। ठीक है। देखो, इसमें की ये आंसर है डॉक्टर मयंक। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी सेफ। आपको 160 या 170 आए ना, तो सही आंसर, तो आपकी ट्रिक सही होगी। ये मत करना कि आप ज्यादा अटेम्प्ट करो 190,
उसमें से तुक्केबाजी, क्योंकि लक फैक्टर यहाँ पे होता ही नहीं है। मैंने जब पहली बार एग्जाम दी थी जीपीएससी की, तब मैंने अटेम्प्टेड कैलकुलेटेड रिस्क दिया था नीट एमडीएस में, मुझे अच्छा स्कोर मिला। फिर मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब में आ गया, तो मैं 200 के 200 टिक करके आता था। तो मेरा स्कोर इतना खराब होता था ना, इतना खराब होता था ना, लेकिन मेरे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, आई वॉज ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्वेंट, बट फॉर जस्ट टीचिंग यू, आई एम अटेम्प्टिंग ईच एंड एवरी एग्जाम। ठीक है, तो ये मैं देखा कि आपको नहीं आता है तो लीव कर दो। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि आपकी एग्जाम 3 राउंड में होगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आप देखो आता है कि नहीं आता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि भाई गॉड ऑफ क्रिकेट किसको बोलते हैं, तो आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। तो वही आंसर फर्स्ट राउंड में लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रोहित शर्मा इज ट्रू, तो क्या होगा? अब 4 सेंटेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर सोचने पड़ेंगे, फिर पढ़ने पड़ेंगे, फिर सोचने पड़ेंगे, तो आपकी 2 मिनट वेस्ट होगी। तो दैट शुड नॉट बी इन द फर्स्ट राउंड। वो तीसरे राउंड का क्वेश्चन है। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन होता है, उसको भी जाने दो। फर्स्ट राउंड में टू द पॉइंट ये है कि वो है। ठीक है, फ्राइडे के बाद कौन सा डे आता है? तो सैटरडे। उसमें कोई डिबेट नहीं, कोई डाउट नहीं, वो आंसर फर्स्ट राउंड में करना है। तो बाय द फर्स्ट आवर आपका फर्स्ट राउंड पूरा हो जाएगा। अब सेकेंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड राउंड में क्या होता है, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए आप यू कैन स्पेयर 1 मिनट्स। ठीक है, 1 मिनट। तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका कितना टाइम जा रहा है। तो फर्स्ट राउंड अगर आपने फर्स्ट 60 मिनट्स में पूरा कर दिया फर्स्ट राउंड, ठीक है, तो आपका अराउंड 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी के 100 के लिए आपके पास 120 मिनट्स है। लास्ट के 20 मिनट्स आप ई के लिए रखो। तो मान लो कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। ठीक है, तो अभी आप जो भी टेस्ट दे रहे हो ना, हमारी वेबसाइट में अनलिमिटेड टेस्ट है, हम आपको कल लिंक वो देंगे, आप मुझे व्हाट्सएप करना। उसमें आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हो। हमने 50,000 एमसीक्यूज रखे हैं अलग अलग सोर्स से, उसमें भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो लास्ट मोमेंट पर आप अपना इवेल्युएशन कीजिए। दूसरी बात ये है कि आपको पक्का आता है, आपने 170 किया, फिर आपके दिमाग में ये होगा कि दूसरे लोग ज्यादा टिक करके सिलेक्ट हो जाएंगे, तो दूसरों की मत सोचो, आपका ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखो। आप 170 टिक करके आए तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे, इन केस यूर एक्यूरेसी इज करेक्ट। ठीक है, तो अभी के टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोर रिलेवेंट है। अभी हमने क्या क्या सीखा कि ये सिंड्रोम में ये आता है, कोस्ट सेल्स है तो ये है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे जीपीएससी में, वो बहुत टफ नहीं होता है। हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चंस फर्स्ट राइट नाउ, ताकि आप पहले राउंड में क्लियर हो जाओ। 100 क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके जिस जो भी स्टूडेंट्स को दिक्कत है, वो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हम थोड़ा काउंसलिंग रखेंगे, आपके जो स्ट्रेटेजी वो भी हम बनाएंगे। लेकिन हाँ, जिन्होंने फी भरी है वही, क्योंकि 3-4 बच्चे ऐसे हैं कि हम ऐसे ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं। कोई बात नहीं, महंगाई थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा कृपया करके वो भी फी भर देना मैसेज करने से पहले। तो गाइस, आज के लेक्चर में और कोई डाउट हो तो पूछिए, वरना हम वाइंड अप करेंगे। जो लोग ये लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है, उनको आपका टाइम बिताने के लिए खूब खूब धन्यवाद। फॉर यू इट्स ए motivation that you can study by YouTube also without paying fees. But for you, it is very easy to like and share. So please like and share this channel. Also, don't forget to subscribe. We will be putting all the dental contents not only for GPSC but also for first to final BDS content. I hope there is no more doubt. For today's lecture, we are over with today's guidance. Thanks a lot for watching. Have a nice time. Good night.